paper 2 of European history, and first of all we would be starting with the topic is the main events of World War First. So, World War First starts from 28th July 1914 and it ends at 11th November 1918. And 11th November 1918 is known as the Armistice Day, when the World War First ended. First of all, we would be looking that what was the event that led to the start of the World War First. And it was only the murder of one person and it was the firing of one bullet that led to the World War First, that resulted in the killing of 20 million people, and it led to sufferings and destruction and massacre at a very large scale. So, in 1914, you will find that Eastern Europe and specifically Balkans, they became the powder keg that led to the First World War. तो यूरोपियन हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो पाउडर कैग कहा जाता है बाल्कन्स को, और पाउडर कैग मीन्स कि जिसके अंदर बारूदी मवाद भरा हुआ होता है. सो इट वाज अ पाउडर कैग दैट erupted and led to the World War First. So the immediate events were related to the killing of the Archduke Ferdinand of Austro-Hungarian Empire, but the European powers were ready to fight war even before that. As we discussed in our previous lecture, that there was arms race and there were alliances. So the countries of Europe were getting ready in the 1890s and in the beginning of the 20th century for the war. So the immediate cause of the war, the immediate cause of the war was the murder of Archduke Franz Ferdinand of Austria. At that time, Archduke Franz Ferdinand was visiting Bosnia, and he was at the capital of Bosnia, Sarajevo. With his wife, and he was killed by a Serbian nationalist whose name was Gavrilo Princip, and he was the member of a Serbian nationalist secret society whose name was Black Hand. So after the killing of Archduke Franz Ferdinand, Austria declared war on Serbia on 28th July
1914. And at that time, it was considered that this would be a very small and regional fight between Austria and Serbia. And nobody knew that it would lead to the World War First. Here we see that when Austria attacks Serbia, Russia had very close relationships with Serbia. So Russia came to the help of Serbia, and when Russia came to the help of Serbia, Germany came to the help of Austria. So Germany declared war on Russia on 1st August 1914, and slowly and gradually a very small regional war led to the development of a world war. और इस मौके पे बर्तानिया का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है एडवर्ड ग्रे. He tried to avoid the war and he proposed कि इन बड़ी बड़ी पावर्स की एक मीटिंग कॉल कर ली जाए और इनको बिठा के इन मामलात का हल निकाला जाए. एंड ही वॉज अनएबल टू डू दैट. और फिर उसके बाद ऑन 3rd August 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस. फ्रांस पे भी जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर देता है. और फ्रांस पे जब वो हमला करते हैं तो हमला करते हैं थ्रू बेल्जियम. और बेल्जियम एक न्यूट्रल स्टेट होती है. न्यूट्रल स्टेट इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है कि वो स्टेट जिसने खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर किया हुआ होता है और उसने ये कहा होता है कि ड्यूरिंग वॉर आई विल नॉट टेक साइड ऑफ एनी कंट्री, दैट इज नोन एज न्यूट्रल. और बेल्जियम बहुत अरसे से एक न्यूट्रल स्टेट होता है. अब बेल्जियम और बर्तानिया के दरमियान एक ट्रीटी होती है 1839 के अंदर, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लंदन, कि बेल्जियम एक न्यूट्रल कंट्री है और जो भी बेल्जियम की न्यूट्रलिटी को खराब करते हुए उस पर हमला करेगा तो बर्तानिया उसकी हेल्प के लिए आएगा. अब यहां पे क्या होता है कि जब फ्रांस के ऊपर हमला करने के लिए जर्मनी बेल्जियम पे पहले हमला करता है, बेल्जियम को शिकस्त देते हुए वो फ्रांस के अंदर एंटर होता है, तो जैसे ही बेल्जियम के ऊपर हमला होता है उस वक्त अगले ही दिन 4 अगस्त को बर्तानिया वॉर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के ऊपर. और 3 अगस्त को एडवर्ड ग्रे कहता है कि ये लिख लें अपने पास, द लैम्प्स आर गोइंग आउट ऑफ यूरोप. The lamps are going out of Europe and they will not lit again throughout our lifetime. And they will not lit again in our lifetime. और होता भी ऐसे है. उसके बाद जो आग फैलती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो वो फैलती जाती है और एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर का रूप धार लेती है. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यू विल फाइंड 2 groups of countries. One is known as allies and the second is known as
Central powers. Allies are Britain, France, Russia, and Italy. Central powers are Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire, and Bulgaria. So, the European powers are divided into two groups. The Allied powers are Britain, France, Russia, and Italy. Central powers are Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire, and Bulgaria. So, slowly and gradually, all these powers declare wars on each other, and Europe is suffering because of the powder keg that was in the Balkans. Now looking at the main events, कि कहाँ पे कौन से events होते हैं. First of all, there were two fronts, Western Front, and on the Western Front, Germany invaded France through Belgium. And invasion of France through Belgium is known as Schlieffen Plan. And Germany has arranged this Schlieffen Plan well before the start of the First World War. It shows that Germany was planning very early in the 1911s and 12 that it will attack France from the Western Front, that will be called the Schlieffen Plan. And there was another front that is known as Eastern Front. From the Eastern Front, Austria and Germany they attack Russia. So the war started on two fronts. On Western Front, Germany was fighting against France, and on the Eastern Front, Austria and Germany were fighting against Russia. Another important event is Gallipoli Plan. In Gallipoli Plan, France and Britain targeted Ottoman Empire, and they tried to take the control of Dardanelles Strait in order to take the control of the seas, and in order to break the communication between Ottoman Empire and other central powers, but they failed badly and they were defeated. An important event takes place in 1915 when Italy joins the Allies in 1915. I hope you remember in our last class we discussed that Italy switched sides during the First World War.
it had alliance with Bismarck's Germany, and it has alliance with Austro-Hungarian Empire as well. But when the war started, it said कि मेरा जो पैक्ट था ट्रिपल अलायंस वो ये था कि अगर ऑस्ट्रिया या जर्मनी पे कोई और मुल्क हमला करेगा तो तब मैं उनकी हेल्प के लिए आऊंगा। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया ने खुद हमला कर दिया है, तो आई विल नॉट कम टू द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड थ्रू द ट्रीटी ऑफ लंदन इट जॉइंस द एलाइज। अब एलाइज इटली को क्या प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें साउथ टिरोल भी दिया जाएगा, वेरेंटिनो भी दिया जाएगा, और अफ्रीका के अंदर कुछ कॉलोनीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जो इस ट्रीटी ऑफ लंदन का हिस्सा होती है। और इटली भी ज्वाइन कर लेता है एलाइज को। In 1915, another important event takes place. That was the sinking of Lusitania. It was a British ship that had 128 American citizens on it as well, and Lusitania was sunk by German U-boat that we discussed in the arms race in our last class. So U-boat was used by the Germans in order to sink the ships of other countries. So when Lusitania was sunk by the Germans, it led to distress in America, and America wanted to become the part of the war, but at this moment it did not become the part of this war. And here after this there was a pledge by Germany in 1916 that is known as Sussex Pledge. And according to that pledge, Germany promised that it would not attack the neutral ships, कि वो सिर्फ उन मुल्कों के शिप्स को यू बोट के जरिए अटैक करेगा जो इसके खिलाफ होंगे और लड़ रहे होंगे। बाकी न्यूट्रल कंट्रीज के शिप्स को जर्मनी अटैक नहीं करेगा। बट इन 1917 फिर से रिज्यूम कर लेता है, रिजम्पशन ऑफ सिंकिंग। और इस दौर में आप देखेंगे कि जितने भी एलाइज होते हैं दे वर डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका फॉर फूड सप्लाईज, फॉर वेपन्स एंड द ट्रेड। तो अब अमेरिका की बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही होती है यूरोप के साथ, और स्पेसिफिकली एलाइज के साथ हो रही होती है, और इसी तरह अमेरिका उनको कर्जे भी प्रोवाइड कर रहा होता है इन ऑर्डर टू फाइट द वॉर। अब जर्मनी को यह लगता है कि अगर हम जब तक अमेरिका के शिप्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, यूरोप के जो एलाइज हैं वो हमारे खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे, बिकॉज द थिंग्स वर कमिंग फ्रॉम अमेरिका। तो वो फिर से क्या करता है, रिज्यूम कर लेता है सिंकिंग को इन 1917। एंड देन द इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर बैटल ऑफ Verdun, and it was fought between Germany and France in France। और इस बैटल के अंदर आप देखेंगे कि एक छोटे से इलाके पे कब्जा करने के लिए 7 लाख फौजियों की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है वर्ल्ड वॉर्स वर द मैसेकर ऑफ द यूथ। So, Battle of Verdun. Another one is Battle of Somme. That was fought between the Britishers
एंड द जर्मन्स। और इस बैटल में सबसे पहले बर्तानिया टैंक्स का इस्तेमाल करता है। तो दिस वॉज अ वॉर वेयर टैंक्स वर यूज्ड बाय ब्रिटेन। और इस बैटल में मिरेकुलसली बर्तानिया जीत जाता है। और बर्तानिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बर्तानिया में लोगों को यह बताया जाता है कि इन द बैटल ऑफ सोम एंजल्स केम टू अवर हेल्प, कि फरिश्ते आते हैं और वो हमारे साइड पे लड़ते हैं। हालांकि जर्मनी विक्ट्री के करीब होता है लेकिन फिर भी बर्तानिया जीत जाता है। सो दे एसोशिएट देयर विक्ट्री टू द एंजल्स एंड दे गिव इट अ रिलीजियस कलर। They used this thing that in the Battle of Somme, angels came to the help of Britain. And now, in 1917, April 1917, US enters the war. अब उसके पीछे एक वजह यह होती है कि लुसिटानिया को भी सिंक कर दिया जाता है। दूसरी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो होती है जिमरमैन्स लेटर। जिमरमैन was the foreign secretary of Germany और जिमरमैन मैक्सिको को खत लिखता है कि अगर आप जंग में हमारा साथ दें तो हम मिल के अमेरिका को शिकस्त देंगे। और अमेरिका को शिकस्त देने के बाद अमेरिका के 3 इलाके न्यू मैक्सिको, टेक्सास और एरिजोना वो मैक्सिको को दे दिए जाएंगे। अब ये लेटर जब जिमरमैन लिखता है मैक्सिको को तो इसको बर्तानिया इंटरसेप्ट कर लेता है, पढ़ लेता है और बर्तानिया ये मैसेज अमेरिका के प्रेसिडेंट को भेज देता है। उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन जब ये देखता है कि जर्मनी अमेरिका को भी जंग में लाने के प्रोग्राम बना रहा है और अमेरिका को शिकस्त दे के फिर वो मैक्सिको को ये सारे इलाके दे देगा। सो वुडरो विल्सन shares that telegram of Zimmerman with the public, in which it was written by Zimmerman that if Mexico would help Germany against America, Germany will defeat America and few areas of America will be provided to Mexico at the end of the war, and those areas were Arizona, Texas and New Mexico. अब जब ये लेटर वो लोगों को बताता है तो लोगों में जर्मनी के खिलाफ इमोशंस राइज हो जाते हैं और फिर अप्रैल 1917 में अमेरिका वॉर का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आप वर्ल्ड वार फर्स्ट को देखें चाहे वर्ल्ड वार सेकंड को देखें, अमेरिका को मजबूर किया जाता है जंग का हिस्सा बनने के लिए। अमेरिका दोनों जंगों में खुद अपनी मर्जी से नहीं आता। वर्ल्ड वार फर्स्ट में लुसिटानिया की सिंकिंग होती है, जिमरमैन का टेलीग्राम होता है और सेकंड वर्ल्ड वार में पर्ल हार्बर का अटैक होता है दैट मेक्स अमेरिका टू ज्वाइन द वॉर। The entry of America into the war changes the condition of war. Why? The writers are of the opinion that the soldiers of allied powers and central powers, they were very tired of the war because they were fighting the war from 1914. But when America joined the war, they had fresh soldiers, and the fresh soldiers fought with emotions and feelings, and they came with a message that they are going to save democracy from barbarism. And they fought very bravely and they fought very emotionally and they were very fresh.
एंड दैट चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर। उसके बाद वॉर आहिस्ता आहिस्ता एलाइज के हक में ज्यादा आती जाती है, ये जीतने लग जाते हैं और जर्मनी की और सेंट्रल पावर्स की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लग जाती है। हियर इन 1917 another important event takes place, that was Russian Revolution. And in Russian Revolution, the government of Tsar ended, and at that time the Tsar was Nicholas II, and the revolutionaries killed the complete family of Nicholas II. इसके बीवी बच्चे सबको फायरिंग स्क्वाड के सामने पेश किया जाता है और इनको कत्ल कर दिया जाता है, और इवन इनको ऐसी जगह दफना दिया जाता है कि इनका आज तक पता नहीं है कि उनकी लाशों को कहां दफनाया गया था। सो द रेवोल्यूशन दैट केम इन रशिया, इट वाज अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और यहां पे आप देखेंगे रेवोल्यूशन दो दफा आते हैं। एक दफा मार्च में रेवोल्यूशन आता है 1917 में, और उसमें जार की हुकूमत को खत्म कर दिया जाता है। फिर उसी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो पार्टीज बन जाती हैं, मेंशेविक एंड बोल्शेविक। फिर अक्टूबर के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, एंड बोल्शेविक पार्टी वाज लेड बाय Vladimir Lenin, and in October Revolution, Vladimir Lenin became the head of the Russia, and then when he becomes the leader of Russia, he adopts communism as the political system. और इसके बाद रशिया जंग से अलहदा हो जाता है। इट साइंस अ ट्रीटी दैट इज नोन एज ब्रेस्ट लिटोव्स्क विद जर्मनी, एंड इट लीव्स द वॉर। और यहां पे एलाइज की पोजीशन बड़ी कमजोर हो जाती है कि ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया बड़े अच्छे तरीके से इनके साथ लड़ रहा होता है, लेकिन जैसे रशिया निकल जाता है इस वॉर से तो ईस्टर्न फ्रंट भी खाली हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका जब आ जाता है तो फिर इनकी पोजीशन एलाइज की मजबूत हो जाती है। इन मार्च 1918 जर्मनी एक बहुत बड़ा हमला करता है जिसको कहा जाता है स्प्रिंग ऑफेंसिव, और इसको कहा जाता है ऑपरेशन माइकल। और ऑपरेशन माइकल बुरी तरह नाकाम हो जाता है, और उसके बाद जो एलाइज होते हैं वो काउंटर अटैक करते हैं। फ्रॉम अगस्त टू नवंबर 1918, और इसका नाम होता है 100 डेज ऑफेंसिव। और 100 डेज ऑफेंसिव में जर्मनी को दोनों साइड से शिकस्त दे दी जाती है, फ्रॉम ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड एंड फ्रॉम ऑल अदर साइड्स। एंड एज अ रिजल्ट इन अक्टूबर 1918 all the central powers except Germany they surrender, वो हथियार डाल देते हैं। ऑटोमन एम्पायर, बल्गारिया
एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे हथियार डाल देते हैं। और नवंबर 11 1918 यहाँ पे जो जर्मनी का रूलर होता है विल्हेम कैजर टू, ही एब्डिकेट्स द थ्रोन, और उसके बाद वॉर यहां पे खत्म हो जाती है। ऑन नवंबर 11 1918 एंड द जर्मन आर्मी मार्चेस बैक टू देयर कंट्री। और ये भी ध्यान में रखें कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो होती है उसमें बाकायदा जर्मनी को कोई डिफीट नहीं होती। जब कैजर विल्हेम टू एब्डिकेट कर देता है थ्रोन को, तो जर्मन आर्मी दोबारा से वापस आ जाती है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। एंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट you will find that many important events take place. First was the Treaty of Versailles. One, we will discuss that. Second was the 14 points of Woodrow Wilson. We will discuss that as well. And an important thing that took place was that two empires were destroyed at the end of World War First. Ottoman Empire destroyed after the end of World War One, and Austro-Hungarian Empire was also destroyed at the end of World War First, and they were broken into pieces. So, the World War First brought the end of these two empires. The next topic is US entry in the war and its effects. So, first of all, the very first reason behind the US entry was sinking of Lusitania, that on May 7, 1915, German U-boats sank a ship of Britain that contained 128 American citizens, and it led to an outcry in United States of America. But through the Sussex Pledge, Germany promised not to attack the ships of the neutral countries, but later Germany resumed that sinking of the ships that led to US entry in the World War First. Second is resumption of ship sinking. In 1917, and it is estimated that almost 250 ships were sunk by German U-boats, and this was too much for America. And America was involved in trade with allies. It used to provide food, weapons, and it traded with the allied powers. So Germany was thinking that in order to win the war against the allies, sinking of the ships is very necessary, because in this way the allies will not be able to get food and the arms and weapons, and when they will not be having these things,
they can easily be defeated. Third is Zimmermann telegram. Zimmermann was the foreign secretary of Germany, and in 1917 he wrote a letter to Mexico that if Mexico helps Germany against America, at the end of the war, Germany will provide Texas, Arizona, and New Mexico to Mexico. So, why he did that? Because Mexico and America, they were arch rivals of each other. And in order to incite that rivalry between Mexico and America, he tried to wage war on America, and after winning promised that Mexico will be getting new territories in America. और इवन अभी भी आप देखें तो अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान ये राइवलरी मौजूद है कि ट्रंप की जब पिछली हुकूमत आई थी उसने यही कहा था कि मैं मेक्सिको के साथ एक दीवार बनाऊंगा, और अब भी वो यही कहता है कि आई विल build Mexican wall because the criminals, drug cartels and mafias, they exist in Mexico and they come from Mexico, enter into America and they create problems in America. So that is why he says that I will be building a wall near Mexico. So there was a rivalry between Mexico and America from the beginning. So Zimmermann telegram incited the people because this telegram that was supposed to reach Mexico was intercepted by Britain, and then Britain provided that telegram to Woodrow Wilson, who published it. And when the people came to know about the feelings of Germany, it led to the outcry in America that America must also join the war. Fourth reason was that US had economic interests in Europe, and most importantly, it had good economic relations with France and Britain and other allies. और जंग के दौरान almost $203 बिलियन की इमदाद अमेरिका कर चुका होता है एलाइज की। अब अमेरिका को यह लगता है कि अगर वो एलाइज को ज्वाइन नहीं करता और जर्मनी एलाइज को शिकस्त दे देता है तो एलाइज वुड नॉट बी एबल टू पे दैट अमाउंट बैक टू अमेरिका. So he had economic interests with the allies rather than with the Germany and Central powers. So it joined the war also because of the economic interests. And then the most important reason was to counter communism, because when America realized that a revolution came in Russia that would spread to other European countries as well, so it is better to join the war and then impose your own system of government in Europe. And that is why Woodrow Wilson in his speech said that we will go to war in order to save democracy and rights of the people. And that is why they joined the war in 1917 in April. वहां पे रेवोल्यूशन कब आता है? मार्च के अंदर 1917 में, और ये वॉर ज्वाइन करते हैं इन अप्रैल. So it is said that it was to counter the communism because they were very afraid of communism,
that if it starts spreading, then it will not be stopped and it will be a big loss to United States of America and capitalism. So America joined the war in order to counter the communism.